Keep one thing in mind, attendance. I will be very serious with these things. Attendance and your internals, they are interrelated, and your class performance will be your internals. If at all I'm taking internals, because the class teacher has to internals, I will not take a separate exam for internals. Whatever you are doing in a class, your class performance, that is your marks and attendance. Keep that thing in mind. Okay, so you put up the CMD here on the orb on the bottom here, wherever you have, because it's the second screen. Okay, and here you write the Java. Okay, then you enter, and if you have loaded Java, you will get all this information. Okay, you get all these things if you have the Java installed successfully on your system. Okay, now you could also say here Java, then version. Okay, there should be some kind of a space, maybe. Yes, so it's telling us this is latest one, the recent one, that's 2021 4th, April 20th April it has been released this year. So it is 16.0.1 whatever. So if you have installed it, you should be able to see this information. Okay, now second thing is, in Java we need, in this Java, when you load the Java, Sajid Mushtaq has come up, we go to the, I open up the file explorer. Okay, and I go to the whatever that is. Handle, yaar. I don't know what's happening here. I have messed up with the window of this. Are you able to see the screen? Because I have messed up the screen of it. Once again, where is it gone? यार मैं किस स्क्रीन को पकड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे. एक मिनट, just bear with me. Okay. It has come to this side. Let me get it on this side. Okay, now I got it. And this should be here, right? Let me close the participants and let me put this pictures here. This is my Zoom, get it down. This is my, okay, here it is C. Okay, here it is a C drive. In a C drive, we got the program files. One is the x86, one is for the 64-bit. So I open up this guy, and there is the Java. Okay, this is where you have installed the Java. When you install the JDK, Java Development Kit, I told you when you download the JDK, basically you are downloading JRE and JVM with it, and with all the features of development tools, everything is there. Okay, now concentrate and look into the screen and watch what I'm saying. That in this program file there is a Java folder, and there is JDK 16.0.1, whatever you have downloaded, and there is this bin. Okay, this bin, and here are the lot of things. Everything here is everything what we need for the Java to run and all. There is JRE, JVM, everything. But the two things which I need is the java.exe. This is your Java runtime environment, which will run your code, and this is your compiler, Java C.exe. This Java C.exe is your compiler, which will convert your code into the bytecode. Okay, so we have two files here. I'm also recording this, so you can see it later also. Just concentrate properly. Sophia Altaf has come. Is kuch problem hai? Anyways, so we are saying in the C folder there is this program files, then there is Java, then there is JDK 16.0.1, then there is bin, and in here there is the two files. One is your java.exe. This is Java runtime environment, which will execute your class files. If you have a class file, the bytecode, it will run that for you. It will create a machine executable for that. It will make that executable file for that and run that on that particular system. And there is a Java C, firstly, which we need as a programmer to convert our source code into the bytecode. Okay, na? So
if I write here in the if I write on the command prompt a Java C, Java compiler, and it is giving me all the information, but for you it will not give any information. Why? Because you have not set the path where this Java compiler is. So before you can do that, what I did, you need to set the path कि ये Java compiler किधर है. Because if you want to run the Java compiler, you want to compile your code, okay, then you need to tell the system where the Java compiler.exe is. Where is it? It is in C program file Java JDK and 16 point whatever version you have downloaded, bin. So we copy that. We copy this path. This is what what's the name? Danish Fayaz? Yes, Danish Fayaz was telling yesterday that we should select the path. What is kiski path? Java compiler ki path. So we have to set this path into the environment variable. This is one thing. We may also have to set the class path so that we can run from anywhere. Right now I want that कि भाई ये जो java.compiler है इसको मैं copy करूंगा ये path. So where is it this path? This is C program files Java folder, then JDK 16.0.1/bin. It's there. Right now I go to my computer. Let me go to the desktop here. This is this PC, and on this PC you'll say right click on this PC and properties. Here you have this PC. You have done what? You have copied that path. I have copied this path here. So if I show it again, this PC here, in the C program files, where's the program files here? Then Java, then JDK 1.16. whatever, then bin, and here is your Java compiler. So you copy this path simply and go to the desktop here where the PC, my PC is, this PC is, or my computer, the old computers. You right click, say properties. Now, depending upon the version of the operating system you are running, the properties windows will come differently maybe, but there it will be somewhere the advanced system settings, this one, which is on the right, advanced system set, this will come up, okay? Depending upon your operating system, what you have, it will maybe here, it may be there, but in my case, it is here, advanced system settings. I click this and it open up that old window. This is coming on this screen. Let me get it here. It will get this old window. Sajid Mushtaq, Junaida Shaukat, and Basit, and who else is here? Shahid Hamidar. Open up the cams. Okay, never keep your cams off. Now, this gets the system property window. Okay, the old window. You may get directly from their right click properties and this thing, or you may have to click the advanced system settings here. And then there is an environment variable. This environment variable. You click it, and there you see the path. As you can see here, this is the path. Here or here, you see the path. And if you edit it, okay, and you can put up here, you can put up you can say new, and then paste this path here, paste like this, okay? And I have already done it here. But if you have an old system, little older Windows, there you will open up, there will not be this window like this. There will be the path variable, and then you put semicolon on the back of the path. There's already a path, long path. You put a semicolon there, the terminator, what you have in C, and after that you paste that path. If you don't have this like this, if you have a path and then there is that in the path, there is all the paths concatenated together with a semicolon. यानी कि एक पाथ है सेमीकोलन, दूसरी पाथ है सेमीकोलन, तीसरी पाथ है, तो आप अपनी पाथ लास्ट में लगाओगे, सेमीकोलन लगाओगे और लगाओगे उसमें, अगर ओल्ड सिस्टम्स है. अगर ये नया वाला आपके पास सिस्टम्स है तो यहाँ पे न्यू करके आप वो डालोगे. मैंने ऑलरेडी वो कर चुका हूं मैं, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है. सो लेट मी, ये मैंने कहां से किया, ये मैंने एडिट, एक मिनट, लेट मी डिलीट दिस. इट शुड बी दिस पाथ ना, यहाँ पे ये वाली पाथ जो सिस्टम वेरिएबल्स है. Edit, and you can do it there, right? And put up the path there. Does it make sense what I'm saying? If you see the variable, user variable for Juni here, and I edit this path variable, and you can see it's already there, right? The path is already there.
C program file, Java, JDK. If you don't have, just I create a new, then after new, I paste what's happening to it. I don't know. I paste it here like this. The path that is C program file, Java, JDK 64 bin. So what are we doing by this? We are telling the operating system where my java.exe is and where my Java compiler is. Because you want to compile the file, you need to tell where it is. So I don't need twice, so I keep it once only. So okay. So after you are done with that, this, okay, and close it. Then if you go to the command prompt and you say here Java C now. Before, if you said Java C, your operating system will tell you what is this. I don't know. I don't have any information about this because the path was not selected. Okay. Now if you say Java C, your compiler will exactly give the information about it. The whole thing will be given, whatever there is the information for this. So that means you have successfully loaded the path. This is the test for it, that have you loaded the path or not. Do you understand this thing? Okay. Are we clear with this? You can open up your mics, you can talk also. That's not a problem. If you have any issues, you can talk. Farsha Bilal and Sajid Mushtaq, you should open up your cams. I should not be telling you all the time. Okay. Now, what I do is I will create a folder, and where we will, because couple of days we will do it in a notepad, so that why we do it in a notepad, because by that we'll understand the हमने class, क्योंकि Eclipse खुद ही करता है सारा, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ता है आपको, तो नोटपैड में तो थोड़ा सा हम सीखेंगे उससे, ठीक है ना, समझ आ रही है. सो कुछ डेज हम नोटपैड में करेंगे, बाद में we switch to the Eclipse, because Eclipse is much easier to work with. IDEs नोटपैड में सारा कुछ खुद करना पड़ता है, लेकिन हम वो करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी आदत हो जाए चीजों की और समझ आ जाए कि क्या चीज है. Okay, so for that I go to the C, for example, I go to the C folder here, this PC, go to the C, okay, and I create here, wherever you want to create, it's your choice. I'm creating in a C, just simply new folder, and I call it Java P. Java P means Java programs में यहाँ रखने वाला हूँ फिलहाल, जो मैं नोटपैड में बनाऊंगा, ठीक है. So Java P बन गया, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा, न्यू Microsoft text, this is a text document in notepad, and I'm calling it maybe and I'm writing, keep it in mind, keep this thing in mind, I'm writing first letter cap, first FIRST, मैं first ही नाम लिख रहा हूँ इसको, .java. What happened? What's happening? सर हमें घर के लिए निकलना है, हम लोग लीव कर सकते हैं? As you wish. Chat. Faizan in WhatsApp classroom. He's not able to join the meeting. Okay. Faizan in WhatsApp. वो भी से WhatsApp join नहीं किया अभी. As you wish. I'm saying as you wish. Your choice. I got no request so far in the Java MCA 5th. There's no request at all. Students. No, अभी request नहीं आई मुझे इसमें, ठीक है ना. So he should send me a request here. Basit, he should send me a request here. So I'm creating the first .java here, okay, and I open it up. Now, if you have again the old, if you have the old system, keep one thing in mind. If you write a first .java, it will not work like that. Then you have to say like this: right click, new आपने किया text document, Microsoft text, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, Microsoft text कहाँ गया, text document हम करेंगे यहाँ पे create. Then इस ना write इसका new इसका rename करेंगे यहाँ पे. So if you write it like say मेरे फाइल का नाम है कुछ लिख सकते हैं, say for example juni.java लिखोगे आप, लेकिन पीछे से वो .text ही लगाएगा, ठीक है. जो पुराने सिस्टम्स है ना, वो आपका .java कन्वर्ट नहीं करेगा, इट विल स्टिल बी .txt, लेकिन नाम रखेगा juni.java. आपको लगेगा मैंने जावा फाइल किया, फिर वो रन नहीं होगा. तो उसके लिए आप क्या करोगे काम, यू विल कीप दिस थिंग इन डबल कोट्स देयर. सो यू विल कीप द नेम इन द डबल कोट्स, यू कीप डबल कोट्स में नाम लिखोगे तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कैन चेंज द एक्सटेंशन.
of the file and it's creating me the Java file now. ठीक है, तो अगर आपके पास ओल्ड सिस्टम है आप नाम डबल कोट्स में लिखना, ताकि अगर आपने डबल कोट्स नहीं लिखा, आप चाहे आपने नाम लिखा फर्स्ट डॉट जावा, लेकिन बैकग्राउंड में वो जो है ना डॉट टेक्स्ट ही सेव होगा, डॉट टीएक्सटी ही सेव होगा, तो उसके स्टूडेंट प्रॉब्लम है यार मैंने तो जावा फाइल कर दी तो हो ही नहीं रहा रन, क्योंकि वो एक्सटेंशन डॉट जावा है ही नहीं, वो एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर अपना नया सिस्टम है तो फिर वो खुद ही करेगा, जैसे इसने किया यहाँ पे मेरा, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड है सो इट डजंट मैटर फॉर अस। ठीक है जी, लेकिन जिसको है नहीं तो वो ये करेगा। Sophia Altaf, you are looking like an, some kind of an saint, and there is Noor coming on the back. I told you many times, just change the position. Anyways, now I open the first.java and I am trying to write my first code. The first thing first. What is the name of the file? I ask Zubair, what is the name of this file? Now Sophia Altaf has got some wind effect also. It's looking like she's flying now. Anyways, what's the name of the Shah Zubair? What's Yes, the name sir. of the file? Sir, First.java. Java. Whatever the name of file is, the class name should be the same. Keep Yes, this sir. thing in mind. And that is why I kept F capital, because it is the convention. The class names should be the capital first. It's a convention. So keep it that way. So that means wherever you see the class name F capital, so it's got to be some kind of a class. Okay? Because lower cases are like reference variables or functions or methods. If you write something in a lower case, that is going to be method or it is going to be a variable, either reference variable or normal variable. But if you got, now I got the request. One second. So build your concept properly. Faizan, okay. Okay, Fazu is in. Now the first thing I will say, what should I say? What should I say? I should create a class. And we know we have a main method also, but main method is inside the class. Okay, जहां आपका वो C++ का मसला था, उसमें आपका क्या होता था कि आपका जो वो है, सर आपकी आवाज कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है। उजैर कदीर अब आ गया जी सर, बीच में कट रही है। हर एक के लिए कट रही है कि ओनली फॉर दिस? आप लोगों की आज वैसे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। शाह जुबैर पता नहीं आसमान में कुछ पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है उधर। अब कॉलेज में हो? यू आर ऑल गाइज इन कॉलेज? उजैर कदीर तो आवे उजैर सब ठीक पड़ तू कॉलेज? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, कॉलेज में ही है। ओके, ट्राई टू कंसंट्रेट। ओके, यू कुड हैव टोल्ड मी हमने शाम को ली होती है क्लास, आपने मुझे बोला ही नहीं। हमें क्या मसला था, 3 नहीं लेते, 6 लेते, 7 लेते। तो हम सुबह ही 10-11 बजे आए थे, इसलिए। अगर आपने मुझे बोला होता ना तो हम कुड हैव टेकन दिस क्लास इन द इवनिंग। क्या मसला अपने तक था सारा। कोई बात नहीं सर, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, आप फिर भी कंसंट्रेट करो। इफ यू कैन carry on with this, that's good. Okay. So the class which we say is called the public, and we have to go into detail. Why is this public? What is this access modifiers and all? So what makes do it as a public? If we don't keep it public, then what should we do? And if we don't write anything, what is this? Is it default? Is it private? Like you have access modifiers in a C++. It's kind of same, but it's different. But we have to learn a lot about these things. Okay. Many people have already known it, knowing these things because they must have done coding in your BCA. But many of you सर फिर से कट रही है। सबको आवाज कट रही है या सिर्फ सोफिया को नहीं आ रही है? नहीं सर, आवाज ठीक आ रही है। सोफिया, that means it's from your end some issue. ठीक है ना बेटा? ओके सर। आप एक काम करेंगे, फिर बाद में रिकॉर्डिंग आप देख लेना, because you have to see it, because you have to go step wise to set up your system. ठीक है ना? तो मैं एक पब्लिक क्या बनाऊंगा यहाँ पे? क्लास पब्लिक। मेरी माइक लगी हुई है ना यहाँ पे। पब्लिक क्लास, देन व्हाट इज द क्लास नेम? नो जुनी नहीं, दूसरा था वो। व्हाट्स द नेम? फर्स्ट, FIRST, पब्लिक क्लास फर्स्ट।
and this is my class first. Okay, this is the public class first. Let me maximize it. So this is my public class first, and everything's gonna be inside this. Even your main function has to be inside this. Okay, C++ में main कहाँ होता था? What was the main in the C++? Class से बाहर होता था ना? Yeah, there is some issue with the Sophia's voice because आपकी voice कट के आ रही है, so it is some issue with your internet maybe. So we say here public, then we say static. We have to understand each and every keyword here. Why public? Why static? Public, static, void, main. Many things are already clear, you know that. Then I say string. Then I can put up a bracket here. Then I'm saying args, or I could have put the bracket, these bracket dabba na dabba, that here. I can put the dabba here or dabba there. That is your choice. We'll read that in arrays. What is that? Okay, the syntax of arrays, because the character array here, we already know it from the, even from the C, the command line arguments and all, you know that. Okay, this is here, and I am here writing one line of code, but I'm keeping S capital. I'm saying system dot out dot println, rest all small cases. Then I'm saying assalamu alaikum. Okay, double quote close, and terminator as such is this. It seems to be very simple, but there's a tons of information in it, and for getting it properly is very important. Okay, Samira Fumbo अब आ गई, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं उस पहले उस फोल्डर में जाता हूँ जो मेरा फोल्डर है. देखें जावा पी, ये रहा मेरा जावा पी. कहाँ गया पता नहीं, कहाँ जाता है यहाँ से ना ये, आई डोंट नो वेयर इज इट गोइंग. जावा पी, अच्छा यही तो है, आके ही मेरे. हाँ ये है ना, तो इसको मैं यही रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके. इसका बैकग्राउंड पता नहीं व्हाइट व्हाइट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से व्हाइट. हाँ, तो ये जूनी वाला मैं डिलीट ही करता हूँ फिलहाल. ठीक है, ये फर्स्ट डॉट जावा हमारा ये वाला है ना, इसमें मैंने पहला लिखा. पहले हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको हम कंपाइल करेंगे आज थोड़ा सा और रन करेंगे. सो अब मसला ये है कि जो पब्लिक क्लास मैंने फर्स्ट, तो पहली बात आपने याद रखी. कहाँ से आवाज आ रही है? सो पहली बात आपने, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी को वॉइस आ रही है ज्यादा. सो पहली बात आपने याद रखा, द क्लास नेम should be same as that of the file name. Okay, and the class name first letter has to be capital. So if I ask you guys, which other thing here is capital? I'm seeing one thing which is capital. Can you see? System. System S is capital. So what does that specify? System is a Class. system is a class. We understand this, that system is a class because इसका S capital है. ठीक है, so ये एक हो क्या रहा है यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा ना हमें. System dot out dot println. Okay, so we have to figure it out. What is this? उसके बाद क्या है? Out. Now out is all small. Now when you have a small letter something, it could be either variable or method और फंक्शन. लेकिन फंक्शन को पीछे पेरेंथेसिस होता है, तो ये फंक्शन हो नहीं सकता. ठीक है ना, क्योंकि अगर ये फंक्शन होता तो ये इसके पीछे क्या होता? पेरेंथेसिस. जैसे प्रिंट एलन को पीछे पेरेंथेसिस है. सो प्रिंट एलन आपकी मेथड हो सकती है, आउट मेथड नहीं हो सकती. सो व्हाट इज आउट? आउट कैन बी अ वेरिएबल. नो, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल? इट कुड बी अ रेफरेंस वेरिएबल. यस, हाँ बोलो. हाँ आप बोले, वेरी गुड दानिश. So it can be a property. What does that mean? Can be property. You mean to say, I got it. You mean to say it is like a method inside a property or something? You say na something, but Yeah. then I got it. What you're saying. It could be a
that is what is a property or some variable or something inside. Okay, you're right. I got it. The property what you are saying. The property what Danish Fayaz is saying is this thing, that if we have a class, let me draw it here. If we have a class, okay, and we have few data and methods in it, okay, now if I am accessing it with dot operator, so I can access these things, the dot operator. This is what he is saying, the property or behavior. Okay, that the property or behavior is basically the methods. That is what println is. That is what println is. So println जो आपका है, it is a method. ये मेथड कहाँ होगा? बाहर होगा, किसी क्लास के अंदर होगा? सर ये है ना सिस्टम क्लास का। नो, पहले इधर देखो, मुझे जनरल बताओ, जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक बताओगे मेरे को। कहाँ गया है इसका? न्यू फोल्डर बनाएगा, न्यू स्लाइड। देखिए, अगर मेरे पास एक क्लास है, उसमें मैं कह रहा हूँ प्रिंट एलन है, ये क्लास है। इस क्लास का नाम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी चलिए मैं बताता हूँ। ये प्रिंट स्ट्रीम, इसका क्लास का नाम है प्रिंट स्ट्रीम। इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक मेथड इसके अंदर है प्रिंट एलन, ठीक है? अगर शाह जुबैर मुझे इस प्रिंट एलन को कॉल करना है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस क्लास जिसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है ना? इफ आई वांट टू एक्सेस दिस यूजिंग योर C++ concept, आई एम सेइंग, नॉट द जावा concept. लेट मी टेल अ सिंपल C++ concept. अगर मेरे पास एक मेथड है प्रिंट एलन किसी क्लास के अंदर है, कोई भी क्लास, मेरे पास ABC क्लास है, इसके अंदर कोई चीज है, मुझे उसको एक्सेस करना है, हाउ कैन आई एक्सेस इट? सर उसके ऑब्जेक्ट बनाने के जरिए, उसका रेफरेंस वेरिएबल बना के, ठीक है? बिकॉज ऑब्जेक्ट यही है, जो प्रिंट एलन है यही ऑब्जेक्ट है जो जहां पे बना है। तो इस क्लास, अगर मेरा ABC क्लास है, इसका मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, ABC क्लास का कोई रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, से OB1 आई कॉल इट, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल व्हिच इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट व्हेन आई क्रिएट ऑफ टाइप क्लास। जैसे ना आप कौन कभी आप इंट C में करते थे ना, इंट A, व्हाट इज हैपनिंग? A इज गिवन ए मेमोरी जो इंट बताएगा, है ना? इसी तरीके से आपने क्लास लिखा है, वो सिर्फ डिजाइन है। आर्किटेक्ट ने आपको एक क्लास दिया, आर्किटेक्ट ने आपको डिजाइन दिया मकान का, मकान बन गया क्या? लेकिन उस डिजाइन का जब आप इंस्टेंशिएट करोगे, एक मकान बनाओगे, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। और ये जो OB1 है, इट इज कॉल्ड अ रेफरेंस वेरिएबल। इट्स कॉल्ड व्हाट? रेफरेंस वेरिएबल। अगर मेरे पास एक मेथड यहाँ पे है फन, सो हाउ आई कॉल दिस फन? बिकॉज आई विल कॉल इट यूजिंग OB1 डॉट फन, right? I call it like this, OB1 dot fun. Can I call it like this or not? यार 1 मिनट से थोड़ा मिनट बचा है, अभी भाग जाएगा। If I have a class ABC, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया OB1, ठीक है? सो जब मैंने ABC को OB1 बनाया, अब मेमोरी में वो मिलेगा, वो सारा जो क्लास के पास है, वो फंक्शन, इसके अंदर डेटा, वो सारी चीजें। इसमें से मैं कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे फन एक्सेस करना चाहता हूँ मेथड, so I will use this OB1, the reference variable. Reference is like a pointer variable, okay? That reference variable dot fun. और इसी तरीके से अगर मुझे प्रिंट एलन करना है, तो मुझे क्या होना चाहिए? प्रिंट स्ट्रीम का, इस क्लास का नाम है प्रिंट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या रेफरेंस वेरिएबल, प्रॉपर्ली बताओ ना, रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे इस प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, उसको मैं डॉट करके यहाँ पे प्रिंट एलन लिखूंगा, मैं उसको डॉट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? वो जो यहाँ पे मैं लिखूंगा